If you want to learn Sarvam AI in English, then do check out my Udemy course. You can find the course link in the description below. And don't forget to apply the coupon code for the best offer. नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है लूप कागा के और एक नई कोर्स पे। इस कोर्स पे हम सर्वम एआई के बारे में सीखेंगे और ये कोर्स हमारा 90% प्रैक्टिकल होने वाला है। मल्टीपल हम एआई एप्लीकेशन बनाएंगे और ये कोर्स टोटल 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज सर्वम एआई, वाई सर्वम एआई इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन मार्केट, और एक्सप्लोर करेंगे सर्वम एआई का वेबसाइट, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे सर्वम एआई का डॉक्यूमेंटेशन। देन हमारा एक पाइथन प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे फॉर आवर रेस्ट ऑफ द कोर्स। देन चैप्टर 2 पे हम एक टर्मिनल बेस्ड चार्टबोर्ड बनाएंगे। उससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल यूज्ड इन चार्ट कंप्लीशन। हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ चार्टबोर्ड कन्वर्सेशन वर्क। देन हम चैप्टर 3 पे एक टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे टेक्स्ट टू स्पीच काम करता है, हाउ टू यूज सर्वम एआई एपीआईज, हाउ टू जनरेट ऑडियो यूजिंग एआईज। देन चैप्टर 4 पे हम एक टर्मिनल बेस्ड ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन चैप्टर 5 में हम एक वॉइस एजेंट बनाएंगे यूजिंग लाइव किट एंड सर्वम एआई, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ वॉइस एजेंट वर्क, हाउ लाइव किट हेल्प्स अस बिल्डिंग स्केलेबल वॉइस एआई एप्लीकेशन। तो 90% प्रैक्टिकल होने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो अभी थोड़ा डेमो वगैरह देख लेते हैं, चार्टबोर्ड का डेमो, टेक्स्ट टू स्पीच, ट्रांसलेशन एप्लीकेशन और वॉइस एजेंट का डेमो देख लेते हैं। This is our terminal based chatbot application, and here I need to pass some input. So once I pass the input, it will interact with the Sarvam AI model, then it will give the output. So I'll pass tell me a short joke on programmers. Enter. Okay, so we got the output. Why do programmers prefer dark mode? Because light attracts bugs. Okay, so another input I can give like, can you share some information about Sarvam AI in short? So this is the output we are getting from the Sarvam AI. So if I type exit, then it will stop the application. This is our terminal based text to speech application. So here I'll enter some text and internally it will communicate with the Sarvam AI model and it will give the output as audio. So I'll enter hello everyone, welcome to LoopKaka Sarvam AI course. Learn AI with real world project. So I'll press enter now. Hello everyone. Welcome to LoopKaka Sarvam AI course. Learn AI with real world project. This is our terminal based translation application. It will ask me the source language. So I'll enter English. Then it will ask the target language. So I'll enter Telugu. Then I need to enter text in English. Then it will translate into Telugu. So let me enter some text here. So I'll enter welcome to the LoopKaka Sarvam AI course. We are learning how to build AI application using Python and Sarvam AI. So if I press enter, then it will translate into Telugu. Enter. Okay, so it translated into Telugu. Now it will ask, do you want to continue? I'll say yes.
Then again, it will ask enter the source language. So let's say I'll enter English again, and I'll enter a target language as Bengali. Then maybe I'll enter some text, learn AI and coding with LoopKaka. Enter. Then again, it will ask, do you want to continue? So I can press N and enter. So it will stop the application. This is the demo on the voice agent, which is built on LiveKit and Sarvam AI. Let me run the application. Can you suggest one book which is related to Indian culture? I'd recommend The Board of Small Things by Arundhati Roy. It's a beautiful novel set in Kerala, exploring family and social issues. It's a wonderful way to experience the depth of Indian culture. So, where can I buy this book? You can find it on online stores like Amazon or in most local bookstores. Libraries often have it too. Okay. So, how much price it will be? In India, a new paperback usually costs 300 rupees, 500 rupees, while an ebook is cheaper, around 150 rupees, 250 rupees. The exact price depends on the store. So, checking online or your local bookstore is best for the current rate. Okay. Thank you so much. Bye. You're very welcome. I'm happy I could help. Enjoy the book.